Good morning, Suraj Singh, civil engineer, Bharat. Problems and problems and problems in our country. Question arises, very big question. As on today, it is more than 2 months. Kashmir issue burning. It has been burning, and question arises: Shall we, shall we allow Bharat India to break? Is a question. Shall we allow multiplications of problems, proliferations of problems in this country, Bharat India? Shall we allow society get into heterogeneous activities? Shall pollute itself? Question mark. Shall we allow our government, whatsoever government it is, by EVM or by fake government you can say, to do whatever it wanted to do, whatever it do? We don't have any courage to speak against. Question. Shall we allow our public not to awaken? Question. What after all we are? Are we not human beings? Question. Do we have no future? Question. What about all problems that we have been encompassing with? Question. After all, why these questions? A society that was homogeneous, that was secular, that is secular, that has a, you can say, structure or constitution. Why attack on that question? Shall we consider government of this country ultimate? Question. Why we talk of all this? I am a citizen of this country, you are a citizen of this country, but question is, what do we know about our country? Question. After all, what is happening? Question. Everybody should raise an issue or question. Is a question. Why we are not an issue? Is a question. Why we are allowing dissemination of misinformation? Question. Why don't we speak? Question. There are questions and questions. A range of questions, unknown range. In this big country, biggest democracy of ours great nation, Bharat India, a nation which is an extraordinary classification, which is a nation of diversity, which is a nation full of intellectual power, which is a nation of all classes of people, from richest to most poor. This nation, which has left nothing not to have, is being questioned by ourselves, because we have to question ourselves. If we do not question ourselves, we cannot find errors in ourselves, and we cannot remedy those errors. Self-investigation, self-examination is a must in a modern society before somebody else tells us, this is your error, this is your problem. System says that you have to check yourself, you have to examine yourself. But are we doing that? Why are we not doing that? Do we not have a capacity to do that? A question. Do we not have stamina? Question. Do we feel shame? Question. Why we are not frank is a question. Why we are not projecting our intellectual, our national questions? After all, why we are questioning? This itself is a question. People expect that we sleep. Who expect? Politicians expect. We should sleep. We should just get up to eat and sleep. This is question. Don't talk to us. Don't speak to us. Don't raise question to me. I am government. I am your honor. It is government that decides about your future.
because your future is not yours. Your future is government's future. It is government that has to decide what you have to do. Question, mark of explanation. I am today speaking in a different tone, you may say. You will say that. This person has got mad. This person had drunk. You can say. You can say. You have every right to say. Right of expression you have. Right of speech you have. Right of worship you have. And right of right you have. But you don't have one right. That is, you cannot criticize government. You cannot criticize what they do because they are government. They are court, they are legislature, and you have to decide whether you want to be their slave or you want to slave as their bhats, or you want to talk to them and raise questions. All incredible talks. Yes, these are incredible talks. When nation is seen burning without fire, it's a big question mark. I am under constitution of this country. Everybody is under constitution of this country. Constitution is our valued power, which I as a citizen cannot change. You as citizen cannot change. President as first citizen cannot change. President as head of this country cannot change. Supreme Court cannot change. No one can change this constitution. Only total population of this country can change. Why to go to that level? What's there? Let us say we have a government, let it do what it wants to do. After all, it's government. Government. It thinks government is everything. No. For me, no. Yes, for you, yes. This can be for you. It's joke. We're talking poem. We're talking prose. 2019, destiny, temporary destiny from 1947. A long travel of 70 years, around 30 years. And where we have reached. Yes, physically we have moved, education wise we have moved, development wise we have moved, but what about our conscious, our minds, our thinking level, our university of thoughts? Where has it gone? Yes, it is there in my certificates. I have certificate, everybody has certificates, educational certificate, career certificates. That mind lies there. I have to extract that mind from those certificates. There's completely amendment of all files, but I don't keep them here because that certificate is strong enough to keep them. It can keep all these papers, can keep them, but I don't understand all these phenomena. Bharat, a great nation. We people of this country, we people of India, we people of Bharat, having solemnly resolved to constitute ourselves, our country, based on sovereign status, based on social status, based on secular status, based on democratic status, based on free public status, and to keep to ourselves all various rights of justices, equality, etc., liberty, and creation of brotherhood among fraternity, among all people of this country. This is what we got from our constitution, and we salute that, we pray that, we take oath under that, and then forget after taking oath what I oath. We take oath in name of God, we take oath in comfortable language, and then we say, thank you oath, go here, go from here, I leave me alone. We say that virtually. I have taken oath. Thank you, oath. You can leave now. You are free to go. I leave me alone. I don't want to stay with you and don't stay with you. Don't show me your face. Your face is very dirty. I don't accept this face. I am free, free and free. This is our oath. And our duties, we have all duties. Citizens' duty, fundamental duties of citizen we have. We salute Constitution, we abide by that, we do everything, we salute our honor, we salute national honors, we respect everything, we respect our honor, we respect our, you can say, our you can say, idols of
freedom movement. We respect everything. There's nothing left. We will do everything for this nation. Some will develop science, we will do management, we'll do everything we do. We fight for our country. We live our lives to country. That's what we say. Yes, it's there. But how many people know that? I don't know. Maybe 1%, maybe 2%, maybe 3%, maybe none. Maybe PM no, I don't know. Maybe President no, I don't know. We are great people of great country. We are great people of great country. We are more than whole Gulf, Arab. Why am I referring to Arab? Because generally Arab people and American people, they don't believe in documents. Practically, theoretically, yes. Practically, they believe in talks, verb, Vachan. They believe in talks. They never want to write too much. They never want to refer to paper. It's difficult for them to read. It's difficult for them to write, particularly this US and Arab. Shout and shout and shout and extend and cry and show their whole voice and voice and voice. Always voice full. People are walking from here to there to here, there diagonally and longitudinally and this way, but not sitting in. That's right. We are adopting same policy. We have cut down what British told us and what we learned from education, write and do documentation. We don't believe that. Why to bother about this? Yes, we are. We are great people of this country. Our culture has diminished. It is converted to different kind of culture. And that was a problem we faced before, long back in our ancient times. We did not work anything in paper or writing or recording, just we lost our patents and we don't have only we don't know our culture because there is nothing, there's nothing written in our language that we understand. There's language is there which we don't understand. So we are moving without any record. You can say a person moving without any record with him, and that person is called Bharatvasi Indian who doesn't believe in documentation. I'm not talking about documentation, but I'm just giving a reference because documents are alien to us. We don't know that there is document also in whole world, and we don't have any document. We don't believe that. Had you believed that, things would have been different. So why I'm talking all this? There is a background making history. I'm just creating a background for a purpose of new history, and that new history is India Bharat is great. We have different kind of politics now, different kind of systems generating, different kinds of all systems have been changing gradually, taking alternative route, and which alternatives are not acceptable as they take that. Our constitution we consider very high value. We consider high value, but some people abuse it for their own vested interest. And some say we don't accept this. But we are having all power from this. Do we have value for constitution? I am an engineer, for example. How much of my nation I know? There are so many bags in my nation, so many, you can say grounds in my nation. How many of those grounds do I know? How many of those do you know? No, we don't know because I don't care. I care only about my profession. I can care only about that books and that values and that chapters which give me my job and I do job. That is my relevance to knowledge. As far as my country is concerned, though I am living in this, I am getting all benefits from this country. I don't care about this. I just care for sake of statements and for sake of something like that. I don't care otherwise, and that is the problem. And if you say that, okay, fine, it's this and that, and I don't understand that, which we have to understand, that's really very, very extraordinarily important, and that we have to create that one. But we don't understand that. And that's what is happening here. And that's what is happening here, and we have to otherwise consider that. But we don't understand that. It's a great nation. We have to respect that, but we are not respecting that. We have to see where we are, who we are, how we are, and what we have to do. We are not getting anything out of that, and that is really bad luck. You can say anything bad luck as well because we are bad on ourselves. We don't care ourselves, and we don't value ourselves, and that is a problem here. So I'm just making a background for something I have to discuss and I have to contemplate on that, and that is a very important issue. It's not simply just speaking for the sake of nothing, but because of the something we have to see that, and that's a very important viewpoint. And we cannot just ignore that. Ignorance means
We get nothing at all. It's our way of life that we have created that one. And that is very, very difficult to understand why we have created and adopted that approach. It should have been avoided. It's duty of everybody to understand about in which nation one is staying in. If I am staying in this country, Bharat India, I have to be responsible for this to my extent. I'm not saying that I'm responsible as a country whole, but to my responsibility and applications, it is my moral duty, it is my legal duty, it is my personal duty to understand where I am and who is feeding me and how I'm getting it back. But I'm not doing that. On an average, I'm not doing that. What is happening. We are leaving it to nature or government, and because our government is nature, they will take care of that. And we are just enjoying what we enjoy. We don't care for others. A country of 140 billion people, 140 million, 140 crores people, and we are not worried about all of us. We are just worried about individuals. We are worried about our own limits and not exceeding that. That's happening today. Today, we have to see where we are. Is this country going to be one unit, or this country is going to be demolished structurally? Means it has to go this way or that way. 2019 is very critical time. It's happening. Of course, there have been changes in government for last 6 years. Political party system has changed. Some other people are there. Those people who I don't know how much they know about this country, how much they about our heritage, how much they about our cultures and secularism. But those people do not try to understand. Just want to impose something on us. Very sadly, very sadly, I can say I heard one statement, and this policy of those people, agenda of these people, who say, for example, question of NRC is there. NRC, we know all that NRC, what is NRC, National Records of Citizens, and that is what's happened in Assam, and it's going to be commissioned somewhere else also, and which is very, you can say, regretfully submitted in this connection that. It's a politics, it's not actually classification of people. It's, you can say, to my understanding, it's nothing but political gimmicks. Our home minister, who's very responsible position in government ministries, home minister. Home minister is not small post. And even prime minister, you can say, opinion is same, contemplation is same, they have the same kind of thoughts. And they say, this 19 lakh people, 19 lakh people who have been rendered, who have been declared redundant in this country because they don't have citizenship right. And out of those, only those who are non-Muslims shall be allowed to stay, and others of Muslims shall be forced to leave this nation for their own. And that is really very, very problematic. It's not acceptable to me or to anyone else. Keeping this in view, you can say that if contemplation or if thoughts generate this way, and that we allow this community and we don't allow this community, what we call it? I call it very narrow mindset. All I can say, this is a formula that gives us mislead. If ministers, national level ministers, if they talk like that, I think it's nothing but vote bank politics. Either you throw all or you accept all. And they are going to say, they say that we are going to amend Citizenship Act, in which, of course, they will do that. In which just exempt Muslims to leave this country. That's, you leave this country and you are not required here. This is basic policy of this regime, which is executed now. It's executed now, and head of our country is silent. Means he cannot speak. He has no authority to speak, and courts cannot talk. This is current situation of actions in this country. Just like we say, actions in a structure. Our structure is court silent. They have been asked to keep silent. To put don't interfere in our opinion. You are just court, sit as court and do it. And president will also mum. And our executive wants to do whatever it thinks so. So shall we allow this to happen? Have we given all powers to executive?
On what basis we have given power? We have just voted, that's it. And vote doesn't mean everything. We have a powerful constitution in this country. This constitution is not for one man. This constitution is for all 140 crore people, or whatever number it would be. And this constitution has been there since 1950. It's not new. And who has authority to alter this? Only whole public can alter this according to preambles, because preambles state that we people did this in a brief sense and did this. We are responsible for this. This means if there is something to go in this connection, we are responsible except legally based amendments which can be done within constitution have been done. So are we in a position that whatever executive wants to accept? Executive, after all, what are they? After all, what is executive? Executive is those people, those deputies of people, of citizens, they are the citizen deputies, just to do some job which is required according to system. They are not our masters. These leaders, ministers, or even prime minister, they are executives. Executive means you have to work according to the requirement, according to law, according to rule which we made. You have to follow them. You are not our masters, but they are thinking they are our masters. They are thinking we can do whatever they want. They can do whatever they want. If some minister says, and that is in public domain, that only those people will be allowed, they will be given citizenship though they are foreigners, but this section, which is not our religion section, will throw them out. What do we know about that? How you interpret this? As educated person, as citizen of this country, what should I speak about that? Do I have no comments to speak? Means whatever minister speaks, I have to say, yes sir, you do it. Or what shall you say? If you have mindset of religion only, I have no answer. If you have mindset of constitution, you have to speak. And what is constitution? Constitution does not name any religion in any chapter of constitution. It doesn't name any political party in our constitution. It just says that there are citizens in this country and there is a ministry in this country by name of Council of Ministers, and there's nothing else. To an extent, this issue is concerned. Citizenship Act, these are all separate. Citizenship means you have to be citizen in this country, but those who are granted citizenship, there is a formula for that, there is a rule for that, a regulation for that. But if you are saying that we will amend law that exempts, that doesn't allow one community and allows other community, and that is not our constitution. Our constitution does not speak that, does not mandate that, because it simply says we people of this country. It does not say we Hindu people or we Muslim people or we Christian people or we Sikh people or whatever sections or sectarians communities are. It simply says we people, and those we people means whoever is there. One person may be atheist, one person may be religious, one person may be God-fearing, one person says I don't believe, one person may be soul-based. Everybody is a part of this country, a member of this country, incorporated with this country by basis of citizenship. So why do we say like that? Is that sensible? Is that a statement made by a person who is a political forum, who is having constitutional status? If that person says like this and we accept that, that means we authorize that person to speak more and more like that. I don't consider that right approach. After all, this country is not owned by anybody except every person of this country. Prime Minister cannot say that I am owner of this country, but Prime Minister as citizen can say that I am this country. In capacity of Prime Minister, or in capacity of Minister, or in capacity of MP, they simply say we are representatives of people, because it means that. But our people are different. Our environment that is being created is very, very dangerous, very, very fragile. You can say it is like it's generated like towering inferno. You can say invisible towering inferno that has been developed, that has been under construction with the minds of these politicians. This towering inferno can explode anytime,
and whole nation can burn, and actually it's going to do that. Examples are NRC, they are extending to all of the states. I don't know there's a meaning of that. Legal, yes, NRC, okay, you have already there. You want to, even if you want to say this, if you decide that this will have to go, where shall they go? Why they allow them that time? Just this is, you can say, manifesto type work it is. They just want to create panic among people, and they want to place some people that see we are just taking action against those people who do not respect our religion or do not believe in our. This is very, very narrow, a childish statement, a statement made by primary or KG. So they do not understand anything. So these ministers do not understand anything. They are just interested to beautiful public and extract votes, maximum votes to their own, so that they remain in power. They made many mistakes. Latest mistake is Jammu and Kashmir issue. People may say this is not an issue, you're talking against government. You can say, I'm talking against government, yes, because I have right on that. I believe in opposition, first of all. I don't believe in power. Opposition means democracy. Real democracy means opposition, if there is. Unfortunately, there is no real opposition left now since 2014, because opposition parties, those are called, are parties that have no potential. Those parties have no potentials. They are just for namesake, even it's Congress or someone else. They are parties for namesake. They have no say. They have no stamina, no power. They are not disposed there. They have not delivered what they were required to deliver. They should speak against the government. They could call them. They could question, but they are just silent. Means like dead bodies. But when there is no political party in opposition, it doesn't make a difference, because ultimately political parties are nothing. They are representation of people. So who are people? We are people. I don't believe in any political parties, frankly speaking. I believe in people of this country, because nation means people of any whatever country. I am a citizen. I am a part of this nation, and every one of you, as citizen, being part of this nation. And that is nation. Political parties are not nation, and executive is not nation. Nation are people of this country, and that is basic definition of a nation. So I have to speak as opposition, as well as I have to speak in favor of government. That is a role owned by me. Because of rights, I enjoy. Rights you enjoy. Rights everybody enjoys. I can speak that government is doing good when it does good. I can speak government is doing bad against nation when it does wrong. It's both rights. I did not say opposition is only speaking against. No, I do not mean that. I mean, I have no interest in politics or being a political party. I am not seeking vote from people, but I am responsible for right or wrong for this country. So I have full right to say no when it is wrong, and to say right it is good when it's good. Prime Minister is not my enemy. I don't know him. He doesn't know me. We never met together. But his acts have to be given value within credit or debit. If it does good, we will say good. If it is bad, we will say bad. What's wrong with that? You may call it opposition. Yes, it is opposition. Opposition is a real position, if you understand. If you say everything okay, 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 yes, 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 you spoil whole show, because you are not complying. You cannot say yes to something wrong. How can you say that? If somebody does something wrong, you have to be his friend, and his friendship means you have to tell him what is right and what is wrong. That is called friendship. Yes, if you say no, sir, everything is fine. We support you, we support you, we support you, whatever you do. This means you are not friend to that person. You are his enemy. You want to see him die. You want to see him do wrong. You have to tell him this is right or this is wrong. But you can tell him only when you have something in you to tell him. When you can understand, you can read what is done. If he has done something and you don't understand, you can say, sorry, I could not understand it. Explain it further.
So there is no more. So you must have a chance to analyze what has been done, and that is real citizen. Because whatever is done by executive or by someone else in legislature, they do for citizen. They do not do for others, for other nations. They do for us. So if they are doing something to me as a citizen, I have to see that. It's my basic right as well as my fundamental duty to see that my country moves in the right direction. So that is called citizenship right, which is higher than political leaders' right and higher than everybody else, because citizen is highest in country like ours. It's not president, it's not prime minister, it's not cabinet minister, it's no one else. Or citizen is highest authority, highest power in this country, Bharat, and in every country, in fact, which believe in democratic and republic and sovereign principles. So we are sovereign means self-rule. Self-rule. I am king of my country. I am prime minister of my country. I am president of. If we think this way, we can understand where we are. That we shall never think bad for this country, and we'll check that what's bad. But we are not doing our job. We are just, you can say, inclined to one thing, inclined to either this party or that party, this person, that person. Inclination is okay, inclination is there, but limited inclination is okay. You just incline blindly, then you are harming your country, you are harming yourself, you are harming your future of family. You have no right to harm yourself, but you are doing that. I am inclined to this, and that's it. His right. What my option is, or my party is right. This BJP is right. Don't speak against this. Congress is right. Don't speak against this, and this right and that right. When this tendency is consolidated among citizens, that country has no future. That country has no future. Why should we restrict to party or some candidate? Why are we not open? After all, this is country. This is not private property of anybody. This is country, and we all constitute this country. So we have to be free. Those who say opposition people are bad or foreign people are good, that's all completely irrelevant. If I speak something against my government, against executive, this means I am thinking for my country. If I am wrong, I should know where I am wrong. If I am right, then you should know what you should do. That is called real relation between citizen of a country and executive. So what is wrong with that? People start saying, "Oh, you are talking always against government, and you're a congressman, or if somebody say congressman, or you're a BJP man." This is childish behavior. Why I am BJP man? Why I am congressman? What they are giving me? Nothing. Why should I worry about them? If there is no BJP, there is no Congress, there is someone else. Who says that BJP is forever or Congress forever? And who knows who is there in power later on? Nobody knows. I don't believe in parties. If you really ask me, I would be happy if all candidates of independent people, or can say independent candidates, win and reach Lok Sabha. I'll be first person to be happy. I want to see 400 or 500 MPs to be free of all political parties. That is called democracy, and that is called politics. Why should we bind ourselves to one party? Why? What's the reason? Yes, for political people, that is a shop, that is a workshop, that is a company, that is an organization which gives employment to them. All political parties. I consider the prime minister employee of that party, or opposition also same. But for me, they are not employees. I'm not employed. My representatives are my, you can say, channel, my pipeline to know what's happening in Lok Sabha. My MP is not my master. My MP is my assistant, my servant, because he's getting salary, he's getting everything. It's my right who should be there to get it. And he should be there. Yes, he's a good person. He's good, capable, potential. He can raise questions, he can talk, he can understand, he knows constitution. I should have that competent person to be a member of parliament, Lok Sabha. But this is not happening. A real democracy is diminished, actually, has been destroyed, and political democracy, political parties democracy, that has come to picture. Our this party system has actually replaced real democracy. So we are calling ourselves democratic, but we are particratic, not democratic. We are party-based democracy. We are not real democracy. Democracy gives right to every citizen to
plays part in this legislature as well as executive. But how many free people are there? All people are related to parties. Whatever, hundreds of parties are there in our country, and you'll find very very few people who are independent or free from these parties in assemblies as well as in parliament. And that's a drawback actually of we have created, is you cannot blame constitution on that. Constitution is silent on parties. It's completely silent. It doesn't say, well, acts speak that. Okay, acts has been governed, has been made for that. But it is people above act. When I think for my country, I have to think for my country and not for my MP or for parliament or for a prime minister. Prime minister can come and can go. Prime minister is not permanent, but country is permanent. Future is permanent. Nobody can change this. You can just modify that. I don't. So prime minister is just a small person. I am above prime minister because I am citizen, and as a body of citizens, it's Bharat. We are above all. We have made this constitution, and we can change it if we want. It's up to us. But it's for public. But public is responsible, not government. Government got no power. We cannot allow government to break this constitution or bring some other book to rule us. No, we do not allow. As citizen, why should I allow that? What interest I have got? I have raised this. Why I am saying all these questions starting this speech. I start up this speech. Why, and why? Is a question. My question is very great. Why should we condone? Why should we consider throw or trash existing constitution of our country and replace it by something else which we do not understand? Why should we pull some faith or religion into our system? Yes, that is personal, that is private, that is family oriented, or that is your society oriented, not Bharat society oriented. Bharat is Bharat. No one can change it. It is its own ruler. It is sovereign. No book can change it. No party can change it. No criminal can change it. No government can change it. It has to move as it is. If you try to change it, it will change you. Remember, it will change you. It is such powerful spirit it is. It's such powerful spirit. Document, there's energy in that, there is consolidation in that, and that is called our great constitution of Bharat India. If you understand that, you will not do something wrong, you will do in the right way. But if you think that, oh, we have to change it, and what is your objective to change it, that is a question mark. Okay, I just let's consider, you want to change it. You want to replace it by something else. But why? Question arises, if something is working, why you want to throw it off? Why? What's thrashing? Why you are thrashing? You may say, this is not for one community. We don't want benefit our community. But this country's community, you think of religious community, we are not a religious community, and we don't want to be. Because the religion which you are claiming, even that what so called, what you speak, Hindutva, let's say, that's also not a religion. That's nothing actually in concrete. You are just imagining something. Some fictitious imagination. Hindutva. You are not having full information about that and what that is, what that title, from where it came to you. You are not aware of that. You have not researched upon that. You are inactive in that field. You do not know what is that, but you want to impose that without knowing what is that. In the Tawa, use a code or something like that. Or this. For that court is not my master. Court is not my God. I have to decide myself. People have to decide itself. Who is court? And who are these political parties? It is my system. I have given it to myself. I am people of this country. You are people of this country. What one party can think of itself? Who is this political party? I don't recognize that. I don't accept any political party. It's my choice. Who are you to destroy this document? I ask a question. And who are you to replace it by some other document?
Who are you? Are you father of this country? Did you bring this country? Did you make this country? This country is governed by constitution of this country, not by BJP, not by Congress, or not by president. This is governed by constitution, which is above all. Even Supreme Court is below that. Everybody is below that. No one has got any right except whole people, whole body of these people to change this constitution. No one is having any power. And if somebody thinks that, he shall be thrashed out, I'm telling you. You have no right, and don't speak nonsense, irrelevant as you are speaking ministers. You are just damaging our nation every day by your political founded chronology, you can say, your crude actions. You're just destroying our mental state, you're destroying our psychology, you're threatening people, you're scaring people by one way or other way, by saying that they'll be out of this country, this and that. This is a threat. And sitting on a constitutional status, you are doing that. You are doing sitting on a constitutional status. You have taken oath on one side and you are speaking something else on the other side. These are both contradictory statements. Either you forget your oath, resign and go back. If you don't believe in constitution, if you believe in constitution, you have no right to issue such statements that everybody shall be absorbed, will citizenship act, but only Muslims will not be allowed to stay here. This is a statement which is criminal one. It's a criminal statement. This is arousing people. You are acting anti-nationally. You cannot say that. Either say for all. You won't be allowed. We don't mind. If they are not our citizen, yes, you are right. And if you say no, 80% of your citizens and 20% no, or 30% no. No, that's not acceptable. That's not acceptable. If you make law, you have to make for all. If you don't make law, don't make for anybody. If they can't prove their citizenship, or you have seen, it's your duty also to ensure that they are citizens not. Because if somebody asks me to prove your citizenship, you are from this country, what documents they have, only those can be used, otherwise no. So even there's maybe crores of people in this country who cannot prove this, but they are citizens. So this is complex and very difficult issue you have taken up. This government is just wasting money, they're wasting time, they're not working for what they should work. They're just wasting time for political reasons. And political reason cannot solve our problem. Our problems will be solved by those dedicated ministers, those devoted ministers who can work on thinking, who can work on researching, who can find where problem lies, and by location of that problem, we can work upon that problem to solve that. That is basic requirement, not this gimmicks of politics. Yes, you need votes, we know. Every party needs votes. But vote doesn't mean you destroy a nation. It doesn't mean that. You show your programs, you show your achievements, and have vote. Who stops you? But criminalized statement cannot be accepted. You have done mistakes everywhere. Everywhere you have done mistakes. Still you are doing mistakes, and you are not accepting that. If a person who does mistake, because mistake is expected of every person who works. No one is perfect in this world. Even experts make mistakes, and specialized people make mistakes, because mistakes are errors and these are part of human actions. If you do something, we'll make errors. That is right. So you also make errors. But if you make errors for every step, which means that you are not clear about that subject or topic, and you just think on, you never use your thought and do whatever you think first to do, and let us see what happens later on. Means your technology is in reverse direction. First to make mistake and then learn from mistake and then do it and then make another mistake, because you did not understand subject thoroughly. You started applying without understanding, without clarity. Then you say, oh, this is a problem, then let us have reconfirmation, re-verification and research and revisit and all that, which is not a thoughtful process, which is not a scientific process, you can say. It means that you are not aware of that. You're just experimenting, you're trying, and everything cannot be tried at home. When status is for whole nation, then constant validity of question and scope of that goes to whole nation or public, you cannot try. You're trying means waste of time, waste of health, waste of money, waste of power, everything. For example, now let us say issue of Kashmir, you did.
Okay, you did fine. Had you thought of that, that is question mark here. You did something, that's no problem. I have no objection to that, but you did. Maybe you thought in the interest of this country. But did you make a study? You did not make any study on before that. You did not do any research on that. You did not have any feedback on that. You did not even analyze on that. You didn't do any formula on that. What would be aftermath position? That's the point. That's the question. Had you done that, maybe you would not have seen what has happened today. Had you done that. But you did not even think to do that because in you can say arrogance, you may say it's arrogance or it's a pride or your fictitious power you have. Because this political power is for me is fictitious. This is imaginary. Okay, you won by votes and every party wins by votes. Keep aside votes and keep aside everything. Think yourself that you are an officer. Don't think you're a minister. Think yourself you are not appointed by votes, you are appointed by direct recruitment. Think that way. And then tell me what you have done. Did you do complete work before that? And what work you did not know. You did because you did not. You did not do anything. Just done. So what is the result? Result is result is that it's not stopping. Somewhere achievement should stop. We can say at one stage that this project is over, it is completed. So we say that now this project is complete, we issue completion on that. This will be commission. But you cannot commission it now. Where are you commissioning it? You did something, it's still moving on. 2 months have lapsed. Exactly. Today is 5th, and it was 5th of August. 2 months are gone. This problem is not stopping. This problem is not telling what I would do. This problem is silent and moving. It's not even showing an alert of any kind. No alert is shown. And you're not also speaking. You're just issuing fake statements. Everything is okay. There's a problem in your mind. There's no such problem. All fake statements. If a minister can issue fake statement, what should I say? He's under oath, constitutional oath. He knows what is his duty, but he doesn't know practically because they are violating that oath itself. They're violating constitution. Question is, what is solution? Actually, it's going away in excess, which you didn't accept that. You didn't anticipate what should happen. And that's the problem. If I do something, I should know that what would be problems after doing this. If I cannot, you can say, I cannot discover what risk factors are there. I cannot solve this. If a risk come, where it's come, but if I'm ready to know and to understand what this can be and what solutions can be taken, it will be better because I can control, I can encounter if there's any attack on that situation. But here it's different. When somebody thinks I am everything, then I don't understand there will be any positive action on that, positive result on that. I am everything has no answer. Yes, if you say yes, I'm trying my best to do something to my knowledge that general certification becomes, to why no sources, whatever which I and the knowledge, whatever I applied that I know that's fine. But just take authoritative control on that, arbitrary control on that, and then say, keep me shut up, don't even respond to people. That is not digestible. That is not even acceptable for the digestion. Highest position of executive means highest responsibility. And highest responsibility means highest type of behavior and conduct. But that is not seen. That is not seen at all. Who will solve this problem now? You cannot say that it will automatically solved. No, it cannot be. Nothing is automatic. Automatic is one thing, and you are exploiting people. They will burn up. They will, you can say, get hatred towards you, and then they will leave you. What is your plan? You did not know. You never tried to know that
You are imagining something. You imagined it and did it. Imagination cannot be done directly. First, we have to analyze imagination also. Is it possible, is feasible or not feasible? Feasibility coefficient is very, very important. It's in life. Why you did not do it? Who stopped you? How can someone take risk of such a community, whole community? How can someone take risk like that? It's not acceptable. Small project, when you design some small project of whatever type, construction or some other, many questions are raised, many probabilities are raised, many risk factors are understood, many solutions are pre-planned. If this happens, we'll do that. If that happens, we'll do this. This is general because mind works. When many people sit or even one man takes care of, it's mind that works. It's not my body. It's not conscious. It's mind that works. And minds tell me this is a problem and this is a solution. And based on that, we plan something. And that's right way. We can say there's a problem in materials and there's a problem in human values and there's a problem in, you can say, time or there's something else which we anticipate and we take care of that one and this process is done successfully. This is also a project, political project, state project, whatever it was. You did not analyze. You are suffering and naturally you are not suffering. People are suffering. Other people, a whole nation is suffering. Maybe people are not even clear about what has happened. They are not suffering, but that day when they understand, yes, there is a problem, they will say, they will curse you. What you have done? I started a lecture, don't take it a lecture. I done analysis of everything. And when every I'm coming here, just based on some feedback or analysis, are we ready to lose our area, our land? We are ready. We are doing NRC in one state. They are saying we'll do somewhere, and all over that. Yes, there are elections. We agree. 2 states or 3 states are going for elections immediately. You want votes. You want to please people. To that extent, means you are not politically oriented. You are manifesto oriented. You are already there to arouse sentiments of people, and you are successful in that. Don't forget. This is election. It's only for 5 years, not for 500 years. People may vote you. You may win also. But shall you be happy with this victory? You are not going to win because of your performance. You are going to win because of such issues, caring, curfew issue, NRC issue and all that, which people are not related to. Most people are not related to that. But you are happy that you have befooled them. Okay, you feel that you won. After that, people will be there. They may not forget you. You may forget you. My statement means that whatever we do, we should do with responsibility and accountability. We are missing accountability everywhere, everywhere. And they say they have one habit to curse others, to say, oh no, it's not my fault, it's his fault. Childish behavior, kindergarten, primary school behavior. I didn't do that, she did this. You think Kashmir issue is over? Now, my contention on this is Kashmir problem over? If it is not over, how it can be over and how much time it will take? There was no plan with government when they did this. They just did this to just tell people, see, we can do it. We can do it or we do it, there's a difference. You just wanted to prove that you had energy, you had will, and you did accordingly. But people, for them you did, they are not happy with this. So what is value of your doing? It was not done for me. It was not done for Bihari people. It was not done for other people. It was done for state of Jammu and Kashmir or whatever you call it now. That time it was a state. It was for those people. But those people are not understanding what you did. And those who are not relevant, they are just enjoying, oh, he did very good, this is happening, it was pending issue, this and that. No. What was your objective? First point is that
and how far you have achieved that objective, that is an investigative point. What I understand that you have not thought over that. I remember that day, I don't exactly where I was doing that time. I was coming from overseas, I think, and I halted your shop for 2 minutes just to see what was happening. Kashmir problem is very big problem now, frankly speaking. It's very big problem. This problem is such a big that we have at present not in a position to solve it in reality. If curfew imposition continues for more than 2 months, this means there is a problem. If there was no problem, they should have lifted this curfew within 3 or 4 days or couple or maximum a week. Just now 2 months, maybe I don't know how many months more. And they are saying that terrorists are to come in. They are waiting to enter. This is a contradictory state here. So many military, 8 lakh, 9 lakh, I don't know how much in that area. And there's a chance of infiltration by some people. Is it acceptable? Is it reality life? It's not reality of life. Yes, if there are 5,000 military or 1 lakh military, we can say there are porosity, there's a porous functioning, military is working with porous and there can be infiltrations. That is acceptable. But it's a continuous control of military there. How can terrorists enter? How? This means you are just telling people to scare, to have, oh, you may be attacked by terrorists. I'm not speaking something against them. My question is, why are you so afraid? It shows that you are afraid. Bharat cannot be fearful. Bharat is Bharat, more stronger than government, more stronger than Congress and BJP. It's people, our potential, our defense forces, our system. We are all proud of that. And there no PM is fighting. Army shall fight. Defense forces shall fight. Why? If there is a forced fighting, that's fine. If there is an opted fighting, that's not fine. You are going to opt that. Because let us do this. Let's force Kashmir, let's close Kashmir, and there shall be a fight against you. And then see, you are doing nothing, these people are fighting for us. They sent us this. They did this. No, Kashmir problem is not related to that. I explained already before what is Kashmir problem, what are laws, what are documents, but what you did. Ultimately, you have to take down curfew. You have to lift it. In no way that you won't lift it. It's a question of time, we know. It's a question of time. How much, I don't know. You should have known this. You should have told, look, if we are going to lift these restrictions the next day, nothing is okay, no problem. There will be no, then say, resonance, or there will be no retaliation from the people. And if there is no retaliation from people, we should be happy. But this is different. How we solve this? Why I understood from various videos that have been published and various opinions that have been taken from some leaders and some citizens of our country and that area, Jammu Kashmir. It is nearly understood that those people do not know what shall happen and they do not accept what has been done. They do not accept males or females, boys and girls, whosoever is there in their stand, school. They do not respect us. They have same status as before. And who takes Kashmir, who doesn't is imperative. That's completely different.
We caused this problem, we have to solve this problem. How to solve? You can talk to some people who are for different trades and different destination. You have to see that they are given part. It's not simply talk. It's not simply talk making. It's a serious issue. My question is, are we going to break our country? That's the question. Some people are criticizing Pakistan. Some say Pakistan is doing that. Some say Imran Khan has done this and done that. I am not concerned with that. What Pakistan does, what his prime minister does, it's not my problem. What they speak in UN, no, it's not my problem. Our problem is different. We got this ourselves. We have to manage it ourselves. We have to handle it ourselves. It came to us sometimes, but we are not able to understand that. They had some degree of pride with them. They had. So why did we not allow them having degree of pride? Why we break that? We break that. We broke it. And now those people who are also ours, who are Indian citizens there, maybe they leave it now because of some reason. I don't know. If we conduct this way, certainly they will do it. Well, just going on speaking or no explanation is no use. Prime Minister speaks a lot, but he does not think a lot. That is his deficiency. He should accept that. Till today, he has no plan at all how to bring back Kashmir to previous track. He has no such plan, it is understood. It is a suppression plan only. Suppress people, force them, and force them. There is a limit. Cannot do that. Believe me, cannot do that. Force application is also limited. If you force it more and more, then it will crush. Do you crush them? Do you intend to crush them? If you crush them, you will not be able to tolerate it. You cannot crush them. They are human beings. But you are just thinking to crush them. Till today, newspaper may say anything, television may say anything, Modi Bhakt say anything, and you may consider anything. Fact remains that world at large, whole world at large, will understand something. Everyone is against this activity, but we are doing. People understand what they call. People understand what they say. They understand that. But why you have to hide it? Why do you want to hide it? Hiding is no solution. We have to open it, view it, research it, and then find solution. That is solution. And maybe this is a different solution or alternative solution which has to be agreed by people of JNK. That is fine idea. There are many other issues, not only Kashmir issues. Kashmir is one of issues. Other issues are economical issues, job issues, financing issues, bank issues, and many more issues with people. Reservation issue, which is very, you can say, critical topic in our connection, which has misconcept among people. Misconcept that or is this reserve seat means just having money free of cost. This is a new generation problem. We have to understand. We can't act like child. Ultimately, we have to bear all these losses. It's our time, it's our country, it's our government, it's our everything is ours. But what we have got, what we have received, with what you can say risk we are managing, what are risk factors? People
should be smart enough. But I'm not finding people smart enough. They may be smart only in working and sleeping, and there is the salaries. Well, we have to solve every problem, which is a requirement. If we don't solve the economy, no, there is no plan for economy. You see, economy has fallen very badly, very badly. You cannot even imagine what they have done. They are saying we will take further growth, this and nothing will come. I'm telling you, nothing will come. It's all fake statements and fake imaginations they are making. Of course, they are ministers, they share responsible questions, but they don't understand. We are having a prime minister, we are having an economic minister, we are having all those ministers who are ill-visioned. There's no vision at all. They cannot have vision 6 years, the last 5 years, they shall never have it because a period of 5 years is very significant just to have vision of nation. But they are not doing that. They don't have any experts to tell them what should be done. The economy has fallen completely. It's very difficult to bring it up. It can't be so easy. Once it is gone, money is lost, means lost, you cannot bring it back. Just go here and there, speak here and there, doesn't make any difference. Remember, it's the principle of life. A person who is brilliant, who has power of mind, who can solve problems, he doesn't move here and there for sake of painting people. No need. You should go in a way, in a formal way. Yes, we have come here, we discussed together something. But just moving for sake of moving for sake of something, no agenda, no further use of that. I can use whole world just for sake. For sake. What's the meaning of that? You can sit here and solve problem and talk to good people from here itself. I need to go there until there's an urgency. No need. But no, we have to go every month, every season. Means you are outside your country. You're not inclined in your country. You're discovering what's the problem, what's the solution, what people think. You're even not allowed any liberty to television channels who are just themselves not happy with this design. Where are we? Actually, I thought to talk something else today, but because of this issue, I just want to share about what is right and what is wrong, what we should have done and we should not have done. But that doesn't happen. In fact, we are in a very critical position currently in this country, and it is very difficult. Actually, it's unforeseen what shall happen. What shall happen in future? Nobody knows. Time is very critically moving, and our youth, which are future of this country, which have power to do something actively, and of course they don't need any harassment. Those people are not subject to harassment, so they can't be harassed even. They can't be harassed even. But we have to provide opportunity to them. They're waiting for some opportunity, and their opportunity is not received. It's not God. What will shall we do? What shall we do? What plan we have for employment? What plan we have for this Kashmir? What plan we have for this Assam and other states? We have no plans, no visions. Had there been plans, what should have been going on that? Have there been that plan? What could have been moving in that direction? But there's no plan. That's the problem. An intelligent person should find a solution with consultants or with someone else or independently. That's very, very important. That's how a person can lead a nation. Nation is more important in political party. Your nation leads political party, and then that political party leads nation. There is not a single problem today which has been solved. Money has gone to where I don't know. Taxes are being charged. Development is not seen. People are understanding. You see really what's happening. What a big team, what a gigantic team they are not recruiting now. You can see other sectors also. Agricultural sector you can see. Crops are not giving their fines, you say Europe is responsible. Yes, Europe will be responsible. But you are too responsible. Are not responsible, you are also responsible.
My talk is very normal today. I'm just trying to express seriousness that we are facing. It's not question of reputation of prime minister or reputation of our country. Question is reputation comes only when we are good. We are having solutions. Why China is restricting more than us, and why what's meaning? We understand the problem. No, no problem. So my approach to you people is we have to think in a way we should think. We should not just leave it to nature or leave it to the say, oh, this is nature, this is a flood, there's war, this is coming. What can I do? This is natural. Yes, this is natural. But you have to think that is also natural. You have to understand that's also natural. Everything is natural because your body is natural. You are thinking natural. You think natural, they become artificial. Many of you, maybe I can say millions of you, must be thinking I am thinking about. That same way. But you are not going to speak because you are concerned, you are seriously telling you are fair, I can say extrovert. We call it that you don't believe in nature, but you believe in nature. You don't believe God, but you believe in God. You believe in God, you believe in everyone, but you do not respect people. If you don't respect people, who will respect? Well, let's go to where is the talks. Kashmir issue is going to be unsolved. I don't know what shall happen. UNO, what shall it do? Other countries, what shall they do? And what shall we do? Well, it was better had they withdrawn this issue and take some other time. But no, they are rigid. They have done losses to nation by doing this. They may say world accept. I don't care for world, but they accept. Don't accept. First, we have to accept. First of all, we have to be readily clear about this issue, which we are not. And I'm not going to repeat what should we do, what should not do, what documents I told already, what is there, but it's question of interest. You just want in dream, oh Kashmir, I have won this, I have won this. No, all fake, all gossip, and people are interested in gossip. It's a burning issue. It's a very burning issue now, and it's more than what is for 1947. It's more than that. That was there was a worry only. There's a worry only that to go to ours or to theirs. Theirs means Pakistan. That was only worry. Now that is not a worry. A worry is how to handle this Kashmir issue. Our Prime Minister doesn't have any idea. Our politician doesn't have any idea. Because they have the idea, they have done it. They have no idea. They have no idea. Just showing in international forum this and that, no use. What they speak, no use. Because they have not got any achievement as well. If Pakistan they have an achievement, you too are not having any achievement. You should understand better. But they will not understand. But we people have to understand. We have to find solutions. And solution only that you had to love people, not land. Had you loved people, not land, you would not impose this curfew. Of course, for I'm not talking of what I'm not mentioning that people have to know. If those people who are residents of that area, who are owner of that area, if they are not happy, how I can be happy? Loss is theirs, gain is theirs. I'm not gaining, I'm not losing. I'm just part of the company that okay, Kashmir is say, let's say Kashmir is ours forever. Our Kashmir is not ours, right? When Gandhi and Subhash were fighting for nation, were they fighting for land or for people? Should we not understand this? Educated people having degrees, you don't understand this?
If we can't understand this, what's meaning? What's meaning of that? Well, बहुत बातें हो जाती है, कुछ हिंदी में बात कर लेते हैं थोड़ी देर, 10-15 मिनट बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि लोग हिंदी में भी समझना चाहते हैं, सब इंग्लिश में नहीं चलता है। हमारा देश जिस मझधार में चल रहा है आज, वो मझधार को कहाँ ले जाएगी शायद वो देश के लोग नहीं जान रहे। समाज को बांटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बांटा जा रहा है। अफसोस और दुख है इस बात का कि कितने मुश्किल से ये देश यहाँ तक पहुंचा और अब उसको तोड़ मरोड़ा जा रहा है, उसको गर्दन में तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग जिन्होंने इस देश को कभी समझा नहीं, अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ा नहीं, जो सिर्फ अपने हाँकना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी सत्ता के भूखे हैं, तो सिर्फ इसका काम तमाम करना चाहते हैं, आज वो लोग इस सत्ता में बैठे हैं। दुख की बात है कि लोगों ने उनको सत्ता में लाके बैठा दिया, और क्यों बैठा दिया शायद उन लोगों को भी नहीं मालूम। अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि ये देश हिंदुओं का है, सोच गलत है। अगर ये सोचेंगे मुसलमानों का है, तो भी सोच गलत है। ये देश किसी का नहीं है, ये देश सारी जनता का है, ये देश सब लोगों का है जो भी इसके नागरिक हैं। सच तो यही है। जबरदस्ती आप बोलते रहिए ये देश हिंदुओं का है, आप बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मानने वाला नहीं इस बात को, दुनिया में कोई नहीं मानने वाला, और आपके लोग भी नहीं मानने वाले, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमें संभालना कैसे जरूरी है। हमारा संविधान है, हम सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। वो संविधान क्या है हम ये नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी समझा नहीं, कभी थोड़ा बहुत बता देते होंगे स्कूल कॉलेज में, भाई ऐसा होता है, संसद होती है, विधानसभाएं होती है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, वही जानना तो काफ़ी नहीं है। हमें देश के बारे में बहुत जानना चाहिए। जिस तरह से हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, किसी भी डिग्री के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं पढ़ाई करते वक्त, तो थोड़ा बहुत ध्यान इधर भी देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया, तो उसकी प्रॉब्लम हमको भुगतनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ आप लोगों को संविधान के बारे में बहुत कम मालूम है, जो कि विशेषज्ञ नहीं है, और अफसोस की बात यह है, दुख इस बात का होता है कि जानना भी नहीं चाहते। इस बात का मुझे दुख है, क्योंकि मैंने देखा है, आप कभी बात भी करोगे अपने छोटों से, अपने बराबर वालों से या अपने बड़ों से, कभी भी कोई बात करोगे, आप कहोगे मैं छोटा हूँ, हम दोनों छोटे हैं, वो भाई उससे छोटा है, यही सोचेंगे हम ये नहीं सोचेंगे कि देश जिस तरफ जा रहा है उधर क्या है आगे, हम ये नहीं सोचेंगे। आज भी जब मैं सुनता हूँ चलती हुई बात लोगों से, ये जा रहा है, क्या होगा, कैसे हो रहा है, वो बात आगे वहीं खत्म होती है, पानी का पानी हटा रहे, डैम नहीं है। खाली भी डैम नहीं है पानी के लिए, इकट्ठा करने के लिए, तो सिंचाई कहाँ से होगी। जब हमने बनाई नहीं है कैनाल, मान लीजिए किसी एरिया में नहर नहीं खोदी है, तो पानी कैसे जाएगा। हम बारिश के ऊपर कब तक बैठे रहेंगे। जिस तरह से ऐसा कहा जाता है, इसी तरह से संविधान के बारे में कहा जाता है। अरे जान तो लो भाई, आप हो क्या। मैंने तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग देखे जिनको ये नहीं पता होता कि लोकसभा क्या करती है, और ये संसद का जो चुनाव कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, या एमएलए का जो चुनाव कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, या जिसका भी हम चुनाव कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, बेचारों को पता ही नहीं है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं, उनसे पूछो देश का क्या नाम है, बच्चा बता देगा, जो चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है वो बता देगा, लेकिन हम बड़े बड़े बच्चे नहीं बता पाएंगे, बहुत से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम सीखने की कोशिश नहीं करते, हम किताब पढ़ने की कोशिश नहीं करते। यही सब। अब देखिए कितनी टीवी चैनल डिबेट होती है, आपने भी देखी होंगी, वो बिठा लेते हैं बहुत से बच्चों को, अगर उनकी आप नज़र देखेंगे, उनकी वो ये सब अच्छी क्लास के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब नहीं है, उनको कुछ पता नहीं। एक पार्टी कुछ बोलती है उस पर भी ताली, दूसरा आदमी उसके विरोध में बोलता है उस पर भी ताली, और क्वेश्चन का जवाब ना वो देता है ना वो देता है। उनसे भी आप पूछेंगे ना, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। इस तरह के लोग, मैंने बहुतों से पूछा, आपने इधर उधर आसपास या जिनसे भी मेरा ताल्लुक, भाई आप बताइए ना,
कि इसके बारे में कुछ जानते हैं आप, संविधान के बारे में या किसी और चीज़ की, जो भी आप क्वेश्चन से पूछें नहीं बताएंगे। हमें नहीं पता जी इसके बारे में, क्या करना है जान के, साथ में करना क्या है जान के बोल देंगे। एक तो आप जानते नहीं, इसका मतलब दूसरा जानना नहीं चाहते। भाई हम तो किताब पढ़ रहे हैं, 12 क्लास है, जाना पड़ेगा, आज जाना है कल जाना है, उसी हिसाब से बताए बात होगी। मतलब कोई सेल्फ, अपने जगह ना प्रो एक्शन होना चाहिए, अपने आप को अपना अध्यापक बना के आगे चलो, वो बात नहीं है। हम खुद अपने टीचर बन जाएं। हमें एक टीचर चाहिए ये बताने के लिए, देखो बच्चा यहाँ ये लिखा है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ के सुनाओ। वो बच्चा पढ़ के सुनाएगा, हाँ इसका ये मतलब बताओ, और वो मतलब नहीं बताएगा तो मतलब वो टीचर बताएगा, फिर उसे रट्टा मार लेगा, वो उसको समझेगा नहीं। वही आदत हमारी है। हम भारत के लोग संविधान जरूर बनाया, हमने कहा, हम ही ने लिखा, हम ही ने डिवाइस किया, हम ही ने इसका उत्थान किया, लेकिन हम जानते नहीं है, क्योंकि हमने एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं किया, किसी ने करके दे दिया और हमने ले लिया। यही है बात, असली बात यही है। चलो कुछ भी हुआ है तो हमारा, हमें काम तो उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। किसी की ताकत नहीं, जब तक वो संविधान है इस देश में, उसको हाथ भी लगा सकते। उंगली जल जाएंगी, तुम्हारी छाती टूट जाएगी, तुम दुनिया से चले जाओगे, पर संविधान नहीं जाएगा, याद रखना। ये मिस्र नहीं है, ये फिलिस्तीन नहीं है, ये वो देश नहीं है जो दम नहीं है इन चीजों में, सीरिया नहीं है, ये भारत है। भारत 2019 का भारत है। भारत बहुत मजबूत होता है, याद रखना। भारत अच्छी गेंदियां नहीं खेला है, भारत ने बहुत गोलियां खेली, क्या बोलते हैं, बहुत मजबूत काम किए हैं, और आपने उस चीज को समाप्त कर दिया। दुख इस बात का है। अब हम समाप्त करेंगे ना करें, बात वो नहीं है, आगे चलिए। ये तो संविधान की बात हुई, आप पढ़ेंगे नहीं, कभी कुछ समझेंगे नहीं, बस बोल देंगे जी जो कुछ हो गया ठीक हो गया। आपको तो पता ही नहीं है 370 में है क्या। बहुतों को मैंने पूछा नहीं पता, तो भी क्यों खुश हो गए आपको बताने के लिए? अरे हाँ वो बस इतना पता है, जमीन ले लेंगे वहां जाके। मतलब आपको जमीन लेने का ही एक मंजिल था इस काम के लिए। इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा चेंज हो गया, इतना बड़ा ऑर्डर आ गया पार्लियामेंट से, और आपकी कीमत जमीन तक ही। इतना बड़ा काम हुआ है, कर्फ्यू जिस पे लगाना पड़े वो छोटा काम तो नहीं है। काम तो पड़ा है, चाहे उस दिमाग लगा के किया कि नहीं किया, तो फिर कर्फ्यू को लगाया भाई। अगर वो कुछ नहीं था तो वो ऐसा होना ही था, आप कहते हैं ये तो होना ही था भाई। अगर ये होना ही था भाई, तो ये कर्फ्यू किसने लगाया? मतलब आपको ये पता था कि लोग लड़ाई करेंगे, लोग कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए आपने कर्फ्यू लगाया। नहीं तो कोई पर्पस नहीं है कर्फ्यू लगाने का, कोई पर्पस नहीं, पुलिस भेज देगा वहां से। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा पक्का हुआ। अब क्या करें, किसी आप देश वाले से बात करेंगे, दूसरे देश वाले से, और ऐसी बात कुछ चल जाएगी, वो ये बात करेंगे आपसे, अच्छा भाई पक्का हो, अब क्या करें, अब क्या होना चाहिए? तो खैर है, हम नहीं जानते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कर दो। गुड। कश्मीर समस्या इतनी बड़ी बन चुकी है, समस्याएं तो बहुत है, हम जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, किसानों की समस्या है, और दूसरे फील्ड की समस्या है, लेकिन हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। खैर, एम्प्लॉयमेंट, सरकार को नहीं पता एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलती है। क्यों नहीं पता भाई? किस बात का मर्ज है सरकार? अगर सरकार बनाई गई है, सरकार पब्लिक ने एमपी चुन के सरकार बनाई है, तो किस लिए बनाई? कौन समझाएगा सरकार को? अगर आपको पता कुछ नहीं है, आप ऊट पटांग फैसले लिए जा रहे हो, तो छोड़ दो गद्दी ना, क्यों छिपके बैठे हो? चल जाएगा देश, कोई और आएगा। हिम्मत दिखाओ, दम है तो। आप बड़े बोलते हैं हम बहुत पावरफुल, तो पावर दिखाओ ना, सॉल्व करो प्रॉब्लम उसको, या तो सॉल्व करो या अपने आप को गोल करो। आप सॉल्व नहीं कर सकते तो खाली बैठने के लिए टाइम नहीं हमारे पास। युवा बेकार है, काम नहीं, कुछ नहीं, हम किसकी वेट करेंगे? कल को वो दूसरे काम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे?
ठीक है गलत है? सोचिए, इतना लिबरल छोड़ देना राजनीति वालों को गलत है। राजनीति में चेक होना बहुत जरूरी है, और चेक कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। हमें एससी नहीं चाहिए चेक करने के लिए, हम खुद एससी हैं, हम खुद एससी हैं। हम चेक करेंगे, भारत का नागरिक है हम, हमें पूरे अधिकार हैं। हमारी सरकार क्या करती है सब पूछने के, सब बोलने के, बहुत बड़ा अधिकार है हमारे पास। अब क्या बोले क्या ना बोले, मैं क्या बताऊं आपको? बोले नहीं बोले, क्या बोले, बस यही होता है। गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी कौन जाने, क्या होगा नहीं होगा कौन जाने। हमें चलते और आगे रहना है, लेकिन सही दिशा मिलनी चाहिए, सही प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, सही मिनिस्टर मिलने चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव काम करें, जो अच्छा काम करें, जो संविधान के हिसाब से काम करें। हम हिंदू मनुस्मृति लगा देंगे, हम हिंदुओं को यहाँ रहने देंगे, बुद्धों को रहने देंगे, हम ईसाइयों को रहने देंगे, हम मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। जब सोच ऐसी हो जाए तो देश का बेड़ा गर्क होना तय है। और एक मंत्री लेवल से ऐसा बोला जाए तो ये बात हजम मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते तो करें। अरे भैया, किसी का देश बाप का नहीं है, ये किसी का फ्री का माल नहीं है, ये भारत देश है, ये किसी का खरीदा हुआ नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने नहीं खरीदा, ना अमित शाह ने खरीदा है, ये भारत की जनता का है। इसका आप कुछ ऐसी बकवास नहीं कर सकते पब्लिक में। हम कानून लाएंगे, हम अधिनियम लाएंगे, हिंदू यहाँ रहेगा, क्रिश्चियन यहाँ रहेगा, ईसाई यहाँ रहेगा, बौद्ध यहाँ रहेगा, इनको हम नागरिकता देंगे, और बाकी जो रह गए कौन रह गए हम समझ सकते हैं, उनको हम यहाँ से धक्का मार देंगे। मतलब तो यही है। और एक मिनिस्टर लेवल का, कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का आदमी ऐसा बोले तो भैया आग लगना तय है। इसका मतलब आज तो आप अटैक उन लोगों पे कर रहे हैं जो आज को आप विदेशी कह रहे हैं, विदेशी हैं माना, तो जो हिंदू यहाँ रहेगा उनमें से क्या वो विदेशी नहीं है? जो ईसाई रहेगा क्या वो विदेशी नहीं है? कहने का मतलब ये है कि आप बाकी लोग जो 20 करोड़ रहते हैं यहाँ पे मुस्लिम लोग, उनको भी धमकी दे रहे हैं ऐसा कह के। और अगर 20 करोड़ लोगों को धमकी दी जाती है, जानते हो उसका मतलब 20 करोड़ लोग और देशों में कितनों में मिलकर बनेंगे? आप एक संसार को धमकी दे रहे हो कि हमारे देश में मुसलमान की जगह नहीं है। ठीक नहीं है, ये आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए, संविधान को डिसाइड करने दीजिए। आप कल को फिर ये अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, जैसी आपकी सोच है कि हम संविधान को अमेंड करेंगे कि इस देश में रहना है तो हिंदू बनो या जो भी बनो, जिसको भी भाषा को आप यूज करते हैं, और इस देश में रहना है तो अपना मुस्लिम को चेंज कर लो, हिंदू बन जाओ। ये भी आप लिख सकते हैं, संविधान में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं इस देश में ये धर्म या पंथ निरपेक्षता नहीं चलेगी, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप माली हो गए हैं। जब इस तरह के लोग देश के मिनिस्टर बन जाएं और पब्लिक आराम से सुनती रहे, इसका मतलब ये कि जो एक खास पब्लिक है वो भी यही चाहती है कि जो ये कह रहा है वो हो जाए। और जब ऐसा होता है तो उस खास पब्लिक के सामने एक और खास पब्लिक होती है जिसके खिलाफ ये बातें की हुई है, उसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर वो लोग ऐसा कहते हैं, मैं सही नहीं समझता इसको, क्योंकि आपको रखना है रखो देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग हैं जो आते हैं विदेश से, लेकिन सामाजिक शक्ति लेके आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। ऐसे आते हैं यहाँ भी नहीं व्यवहार थे। अभी आप क्या करेंगे बताइए? अगर इस तरह की सोच बन जाए कि हम ऐसा डर पैदा कर दें कि ये जो कम्युनिटी है ये यहाँ नहीं रह पाएगी, इसका मतलब एक तरह का दंगा आप कराना चाहते हैं। क्योंकि इतने लोग 20 करोड़ लोग, एक दो तो मान लिए जाते हैं, 20 करोड़ 25 करोड़ लोग आप देश से निकालना चाहते हैं, या उनको आप कह रहे हैं कि अपना धर्म बदल लो, यहाँ रहना है। इसे आप क्या कहेंगे ऐसे आदमी को? ऐसा व्यक्ति जो मिनिस्टर है उसको क्या कहेंगे?
क्या वो इंसान है? कौन है वो इंसान? मुझे तो नहीं लगता उसकी बातों से। एक तरफ उसने लिए धर्म की शपथ नहीं लिया, उसने लिए शपथ संविधान की। उसकी शपथ लेके ही वो एमपी बना, उसकी शपथ लेके ही वो मिनिस्टर बना, और वो ऐसी बात कर रहा है। अभी अभी 3 महीने नहीं गए इलेक्शन को, ऐसी बातें कर रहा है। जब ऐसे हालात हो रहे हो देश में, हमें कौन याद आता है मैं नहीं समझता। हमारी माँ याद आती है शायद, हमारी माँ ही याद आती है। और सड़क पे गिर के क्या ऐसा हो गया। ये देख लो, अब आपको किस देश में रहना है? आपको अमित शाह के डिजाइन से चलना है, या मोदी के डिजाइन से चलना है, या शांतिपूर्वक भारत के संविधान से चलना है? क्योंकि अगर आप संविधान तोड़ने में साथ दोगे इन इन लोगों का जो आज सत्ता में बैठे हैं, तो ये भारत रहेगा नहीं। पक्की बात है, पक्की बात है। क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ ये लोग हैं, SC ST OBC के खिलाफ ये लोग हैं। SC ST के तो पक्का ये खिलाफ है, OBC के बारे में मैं पक्का नहीं कह सकता। आधे शायद इनके खिलाफ होंगे, आधे इनके साथ खिलाफ नहीं होंगे। अब अगर आप देखें, करीब करीब 15% मुस्लिम है हमारे देश में, और आप कह सकते हैं 22% SC ST है, तो 37-37% तो यही हो गए। आप 10-5% OBC की भी ले लीजिए, मतलब 40-45% लोग आपके ऐसे इस टाइम हैं जिनके खिलाफ ये है, जिनके खिलाफ ये रहना चाहते हैं। अब जिस देश में 40-45% के खिलाफ ये हैं, खुद 55% के खिलाफ नहीं है, तो वो क्या भावना आप देखते हैं जो देश चलेगा? क्या भावना देखिए। अभी हम चलते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि मेरी कोई ऐसी बात करने का मतलब नहीं था, लेकिन विषय इतना गंभीर हो रहा है कि सोचना तो पड़ेगा। आज नहीं सोचोगे तो कल सोचोगे, लेकिन जितना जल्दी सोचोगे उतना अच्छा होगा। मान लीजिए कश्मीर आपके हाथ में गर्म हो रहा है, आपके हाथ में जल रहा है, आपका हाथ, क्या करेंगे आप? हाथ में कब तक सहेंगे? जल नहीं मिलेगा, छोड़ो यार इसको। जब आप लोगों को सांस नहीं लेने दोगे, आप लोगों को रोटी खाने नहीं दोगे, आप उनको ढंग से रहने नहीं दोगे, आप उनको टॉर्चर करोगे, तो भाई वो कैसे आपके साथ रहेगा? चाहे आपको भाई सगा भाई भी क्यों ना हो, कैसे आप रह सकते हैं? आपकी बहन ऐसी हो, कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सच तो यही है, नहीं रह सकते। लेकिन मजबूरी है, डर है, रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? आने वाला समय इसलिए, और ये समय खैर, देश को संभालना आपने है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी मिनिस्टर ने नहीं संभालना है। आपको संविधान पसंद है, नहीं सही है, आपकी इच्छा है, लेकिन संविधान तो अब तक है, अभी तक तो है, और रहेगा भी। इतना आसान नहीं है इसका हटाना। तो संविधान को एक बार समझ लेंगे तो अच्छे रहेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर आप ही को फेस प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। और जब ऐसी हालत होती है तो याद रख लेना, बहुत बुरा हाल हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि दंगे हो जाएं, फ्रिक्शन आ जाए सोसाइटी में, कत्लेआम हो जाए, क्योंकि ये हालात मेरे हिसाब से उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ कत्लेआम कह सकते हैं, सिविल वार कह सकते हैं, इस देश में होगी अगर ऐसे हाथ रहा। क्योंकि इतनी दुश्मनी पैदा कर दी गई है समाज में, कम्युनिटीज में, आपस के सांप्रदायिक में, जिसके बारे में बहुत मुश्किल है सॉल्यूशन निकालना। आपके अंदर पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है, तो आप टॉयलेट जाके फ्रेश होते हैं, लेकिन यदि आपकी कमर में दर्द है, आप क्या करेंगे अब भी नहीं जानते। देश को संभालना इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम सोच लें कि हम इस संविधान पर ही जाना है, या हमको मनुस्मृति लानी है। मनुस्मृति लाने का मतलब आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि मनुस्मृति क्या चीज है। उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उसमें कोई सेकुलरिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। एक गंद बना है, एक गंद बना जिसको कह सकते हैं, उसके अंदर वो है। वो गंद बना हमें नहीं लेना है, हमें तो सिस्टम में रहना है। और हमारा सिस्टम है, हमारा संविधान, जो हमें जो भी राइट्स देता है,
वो हम राइट यूज करते हैं रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। लेकिन ये कहेंगे नहीं, तुमको यही मानना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। ये कहते हैं जी SC ST को चांस नहीं मिल रहा क्योंकि उनको ट्रेन जैसे आती है, मेट्रो ट्रेन जैसे आती है उनकी, वो ट्रेन से आती है नहीं आती है मुझे नहीं मालूम, उन्होंने ये कह दिया है कि ऐसा होता है। हमें अच्छी तरह से समझना होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम सब साथ मिल के बढ़ सकते हैं। तू अलग, मैं अलग, ये अलग, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। सोल्यूशन नहीं है, मजबूरी है हमारी। हम 72 साल से समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। समाज में खास तौर से ऐसा समाज बना दिया गया है जो आपस में भेदभाव ही नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है। या तो अब इधर रहो या उधर रहो, देश नहीं टूटने देंगे, याद रख लेना। हमें ये नहीं सोचना कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट है या मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस अपने कर्म से आती है, अपनी मेहनत से आती है, किसी के किसी धर्म से या किसी के किसी समाज का हिस्सा होने से नहीं आती। अगर ऐसे आती तो फिर बात ही क्या थी। मैंने जो समझा है, पढ़ा है, दिमाग इस्तेमाल किया है, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, उसी की शक्ति से तो आप तेज बनेंगे। या आप खाली ये तेज बन जाएंगे जी मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ फैमिली ऐसी इसलिए मैं इंटेलिजेंट हो गया, तो इसको मैं बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं कह सकता कि मैं तेज हो गया इसलिए। बनाना बनाना किसी भी चीज को, चाहे वो एक छोटा सा मकान हो या एक बड़ा देश हो या छोटा देश हो या छोटा समाज हो, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सोच विचार लगता है, बहुत प्लानिंग होती है, पैसा लगता है, वैसी तरह के लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, उनकी जरूरत होती है, तब जाके कहीं कुछ होता है। और फिर बनाने के बाद दूसरा कोई आए, है क्या किया तूने, लात मारो को, आके कोई तोड़ दे, आपको कैसा लगेगा। इस देश की जो स्वतंत्रता की गई थी, ली गई थी, इसीलिए ली गई थी कि हम बाद में इसको तोड़ेंगे। अरे वो लोग जो सताए हुए थे हजारों सालों से, जिनको हम कहते हैं SC ST, जिनको कुछ लोग दलित कहते हैं, अरे भाई उनसे आपकी क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है आपकी उनसे। इस देश के नागरिक वो उतने ही पावरफुल है जितने आप हैं, उनमें आपको कोई फर्क नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे लिए अगर आप कंपेयर करें, एक जगह पंडित है, एक जगह SC है, दोनों साथ खड़े हैं, इसका काम क्या है और उसका काम क्या है, आप इन दोनों को मिला लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। जो पंडित है उसका काम मंदिर में घंटी बजाना, लोगों की शादियां कराना, लोगों को मंत्र पढ़ना, बेवकूफ बनाना, गलत शिक्षा देना, मंदिर में ये चढ़ाया वो ये हो जाएगा, काले कुत्ते को ये दे वो हो जाएगा, इस तरह की बातों को भ्रम डालना, तंत्र मंत्र लगाना, उनके काम ये। और फिर पैसे मांगना, पैसे पहले मांगते हैं, आजकल हजारों मांगते हैं, हजारों, लाखों। क्या होना है जी, ये होनी है आपकी गीता होनी है, आप बोलते हैं पता नहीं जैसे नाम है उसका, कुछ पाठ होना है, 6-7 दिन में होता है, तो भागवत भागवत होने, इतने लाख लगेंगे। भैया ठीक है आप करो, हम दे देंगे आपको पैसे। अब जो पैसे हैं वो दे देगा, जो नहीं है वो कहाँ से देगा, तो पैसे लेने का काम है उसका। और दूसरी तरफ खड़ा है एक SC, जिसका काम है जितनी नालियां चौक हो गई हैं उसकी गंदगी निकालना, और उसके अलावा जो भी नाली में रेन वाटर में पड़ा है उसको गंद निकालना, ये काम है उसका। अब वो कर रहा है वो काम, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ये भी सोचना जरूरी है। भैया आप लोगों को काम करने के लिए रखा गया है, सोने के लिए तो नहीं रखा गया है। ये बातें जब आप समझ जाएंगे देश के बारे में, तो शायद आप शांतिपूर्वक रह पाएंगे। नहीं तो आप कोई भी क्यों ना हो, जो भी इफेक्ट सब पर सच ही होगा। अब नहीं होगा।
चलते चलते कभी ऐसा होता है वो गड्ढा आ जाता है, डीप गड्ढा आ गया, दिखा नहीं, क्या होगा, धड़ाम नीचे हो जाता है। लेकिन निकलना भी आना चाहिए, याद रखना। पहले तो हमने गड्ढे में सेफ्टी नहीं रखी, उसके चारों तरफ हमने कोई ऐसे रुकावट नहीं बनाई जिससे पता लगे भी आगे गड्ढा है, हम गिर जाएंगे, उसमें बच जाए उससे। या रात में कोई लाइट नहीं लगाई, वहां पर रिफ्लेक्टर नहीं लगाया, दिखा नहीं, गिर गए। और दिन में भी अगर गिर जाए तो क्या कहेंगे आप? दिन में तो दिखना चाहिए, नहीं दिखता है, गिर जाते हैं फिर भी लोग। बारिश भी नहीं है, पानी इकट्ठा हो गया, दिखा नहीं, उसको आप क्या कहेंगे? चलो रात का तो मान लिया, आपको दिखा नहीं है, आपको नहीं पता लगा, आप उसमें गिर गए। लेकिन आप तो दिन में भी गिर गए भाई गड्ढे में। इसका मतलब आंखें बंद करके चल रहे थे आप, गाने गाते चल रहे थे, अभी कृष्णा के बारे में, अब उसके बारे में, और आज ये बातें जितनी बर्निंग लग रही हैं आपको, उससे भी ज्यादा है। बर्निंग लगना तो एक तरफ होता है, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा खराब ज्यादा। जब कोई सोचे ये थी कि आग लग जाएगी आपकी बिल्डिंग में, तो आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर पाएंगे? एकदम आप इतने नर्वस हो जाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे। वो सोचना जरूरी है। वो फायर फाइटिंग टेक्निक फायर लगने से पहले आनी चाहिए, और उसका अरेंजमेंट भी होना चाहिए। तो आज हम जिस देश में खड़े हैं, जिस जिस बिंदु पे खड़े हैं, वो बिंदु हमको आग की तरफ ले जा रहा है। खासतौर से जो पार्टी आज सत्ता में है, ये पार्टी वो पार्टी नहीं है जो होनी चाहिए थी। ये देश को देश नहीं रहना दे चाहते। ये वही चाहते हैं कि ये सारे पंडित हैं, ये राज करते रहें। पंडित हैं या दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो पैसे वाले हैं, वो राज करना चाहिए। और ये जो नौकर हैं हमारे 85%, 80%, 90% लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम SC हैं, ST हैं, OBC हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये हमारे नीचे हमारा काम करने के लिए बस रहे हैं। मतलब ये अपने आप को आप बहुत ऊंचा समझते हैं। हमारे यहाँ तो कह भी चुके हैं लोग, हमारा लोकसभा के माननीय स्पीकर कहेंगे, हम उनको इज्जत से कहेंगे, बड़ी माननीय स्पीकर जी ने कहा है पंडित सबसे ऊंचे होते हैं, ब्राह्मण सारी दुनिया को चलाते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, ब्राह्मण लोग। राम धन्य हो आपका, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही त्रिदेव हो, आप ही सारे देवता हो, आप ही देवी हो, आप सब कुछ हो। क्या बात है आपकी, भैया आपके तो चरणों में प्रणाम। स्पीकर हैं आप लोकसभा के, और इससे बड़ा क्या होगा? डेमोक्रेटिक होगा तो बहुत बड़ा है। आप क्या शिक्षा दे रहे हैं लोगों को? क्या शिक्षा दे रहे हैं? मतलब अगर कोई आदमी SC है वो डॉक्टर बन के आ जाए, अगर कोई SC है वो इंजीनियर बन के आ जाए, अगर कोई SC है वो राष्ट्रपति बन जाए, कोई SC है वो फौज में चला जाए, वो तो एम ही है। और आप अनपढ़ हैं, आप पंडित हैं, पंडित घर पैदा हुए हैं, आपको ABCD नहीं आती, आप पंडित हैं। आपको क्या 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 नहीं आता, आप पंडित हैं। आप पंडित हैं, आप बहुत ऊंचे हैं, ज्ञानी। सोच देखिए इन पार्टी लोगों की, सोच देखिए इनकी। तो सोच पे 12 बजे हैं, पूरे भरा पड़ा है, या पानी भरा पड़ा है सोच पे, और ये चला रहे हैं देश। कमाल है, कमाल है, हद हो गई है। देश के बारे में जानते नहीं, देश कैसे आजाद हुआ जानते नहीं, देश में कैसे लोग हैं जानते नहीं, संस्कृति इनको आती नहीं, बातें करते हैं संस्कृति की, आता कुछ नहीं इनको बारे में। लेकिन हम राजा हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी दे देंगे, हम इतने लाख सबको दे देंगे, हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, और नाम इसी का होगा, यही भारत का राजा है, यही भारत की चीज है। जब इस तरह का नशा आ जाए जो बिना शराब पिए आ जाता है, तो उस नशे को उतरने में भी बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो वो नशा जिस सत्ता में आ जाए, हम लोग दे दें वो नशा उनको, तो वो तो फिर क्या खिलाएगा आप भी जानते हो। एक चूहा होता है ना अनाज के गोदाम में, क्या करता है जानते हो? वो अनाज के गोदाम को काट काट के इतना खराब कर देता है कि आपको प्रॉब्लम होगी उससे, आपको प्रॉब्लम होगी उससे।
संविधान को लात मारे ये लोग, इनमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतने बड़े पैसे वाले हैं आप, नहीं। मैं देखता हूँ जब जाता हूँ जाकर दुकानें, ऐसी कोई एक आध दुकान छोड़ दीजिए आप, कुछ दुकानें हैं जो डेकोरेटिव पीस रखती है, उसके अलावा जितनी दुकानें पाएंगे सब अलग अलग है, अलग अलग है, कोई तरह ना हो और दूसरी फैसिलिटी रहे, जब साथ है। खैर, अब मैं बुराई करने के लिए तो नहीं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा तो आपसे सिर्फ इतना कहना है, सरकार क्या करती है वो करने दो, लेकिन हमको कान खींचने हैं सरकार की, हमको कहना है कि आप गलत कर रहे हैं, ये हिम्मत हमें चाहिए। अगर आप इतनी भी हिम्मत नहीं रख सकते तो आप इस देश के नागरिक हो ही नहीं, एक बोझ हो इसके ऊपर, गुलाम हो आप देश के, नहीं प्रधानमंत्री के गुलाम हो। आपके माइंड को बांध दिया गया है, जैसे गुलामों को बांध दिया जाता है कि आपको खाना मिलेगा बस, बाकी काम करते हो, डंडे पड़ेंगे नहीं तो। अगर आप उस राज्य के, उस माइंड के राज्य के, मैं कह रहा हूँ देश के राज्य के नहीं, अगर आप उस राज्य के हो कि जिसमें गुलामी ही करनी है तो करते रहो, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन देश के बारे में मत बात करो। बनो प्रधानमंत्री के गुलाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो, मोदी 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 करते रहो। देश के बारे में बात करने का फिर आपको हक नहीं है। अगर आपने देश के बारे में बात करनी है तो संविधान के हिसाब से बात करनी होगी। अगर मोदी ये कह दे कि मुसलमान देश में रहेंगे तो मैं उसको पीएम नहीं मानता, मैं उसको होम मिनिस्टर नहीं मानता। ना मोदी के बाप का देश है, ना अहमद शाह के बाप का देश है, ये देश भारत की जनता का है। यहाँ मुसलमान भी रहेगा या सब रहेंगे, यहाँ कोई निकाल के तो दिखा दे, कत्लेआम हो जाएगा यहाँ पे। आपकी इतनी हिम्मत, इतनी बोलने की हिम्मत कहाँ से आ गई? गद्दार हो क्या देश के? ऐसी बातें गद्दार किया करते हैं, देशभक्त नहीं किया करते। ये लोग भी देश की लड़ाई में हिस्सा लिए हैं, आपसे ज्यादा लिए, आपने तो लिया नहीं। हजारों मुसलमान शहीद हुए थे, ये भूल गए आप? ये मुसलमान के आसमान से आए थे, ये मुसलमान के अरब से आए थे, ये क्या बाहर से आए थे? ये सब यहीं के लोग हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए मैं आज इस्लाम मान लेता हूँ, क्या कर लेंगे आप मेरा? एक सवाल उठता है, आप क्यों हिंदू हैं? मैं ये आपसे पूछता हूँ, आप क्यों हिंदू हैं? आप जानते क्या हिंदू के बारे में? आपको पता है भगवान का कोई धर्म नहीं होता? कौन से भगवान ने कहा कि मेरा धर्म हिंदू है? किसी भगवान ने कभी नहीं कहा। आप है हिंदू, आपको ही नहीं पता आप क्यों हिंदू है? कोई धर्म नहीं होता दुनिया में, याद रख लो, एक ही धर्म है, मानव धर्म और शक्ति ऊपर वाली, बस। ना सूरज का कोई धर्म है, ना चांद का कोई धर्म है, ना आसमान का कोई धर्म है, ना बारिश का कोई धर्म है, ना हवा का कोई धर्म है, ना आग का कोई धर्म है, ना जमीन का कोई धर्म है। धर्म कुत्ते बिल्ली भी नहीं मानते, धर्म कोई नहीं मानता, सिर्फ आप मानते हैं, क्योंकि आप इंसान नहीं हैं। शमशान का क्या धर्म होता है? कब्रिस्तान का क्या धर्म होता है? क्या धर्म होता है बॉडी का डेड जो हो जाती है? क्या धर्म होता है उस खून का जो शरीर में चढ़ाया जाता है? क्या धर्म होता है इस दवाई का जो आप खाते हैं? क्या अलग अलग दवाई होती है हिंदू मुसलमान के लिए? क्या अलग अलग सुरक्षान है सबके लिए? कैसी बातें करते हैं आप? कहाँ से शिक्षा लिया आपने? किस गधे टीचर ने आपको पढ़ाया है? विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व जानते नहीं। विश्व गुरु बनेगा भारत, ये बनाएंगे हरामी साधु, रेपिस्ट साधु, आपके साधु, ये बनाएंगे देश को भारत, भारत, विश्व गुरु। कुत्ते बिल्लियों की तरह हरकत करते हैं, बदतमीजों की तरह। तो आप गुरु मानते हैं अपना? इनके पैर छूते हैं आप जाके? ये छुए नहीं आप लोगों ने पैर? आप चले हैं बनाने देश को विश्व गुरु। विश्व तो समझ लो पहले, आपका विश्व कौन सा है? बातें बातें, बकवासबाजी, बस वोट आपकी मंजिल है, वोट। और वो भी आप खत्म कर देंगे जब डेमोक्रेसी हट जाएगी इस देश से, क्योंकि आपकी मंजिल वही है। आप जानवरों से भी गिरे जानवर हैं। आप इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो हम नहीं जाने देंगे। जो कोई आपसे बात कहता है उसको एक्शन ले लो, उसको जेल में डाल दो, उनको दबा दो, कर्फ्यू लगा दो। अरे आप भगवान बन गए कब से? शैतान बन गए कब से? आप हो कौन? आपको जरा सी पावर क्या दे दी? आप तो पता नहीं अपने क्या समझने लग गए। पावर किसी के साथ नहीं जाती, याद रख लेना। कोई नहीं रहेगा इस जमीन पे, सब जाएंगे, आपके भी गए, औरों के भी गए, हम भी जाएंगे। ये रखी रह जाएंगे सब यहीं, करतूतें आपकी।
और ऊपर आपको जगह नहीं मिलेगी रहने की, याद रख लेना। लटका दिया जाएगा आपको ऊपर, जला दिया जाएगा आपको वहां पे, रोते रहना फिर। बस बकवास करने के अलावा कुछ काम नहीं है। देश की सोचेंगे नहीं आगे कैसे बढ़ाएं, देश की नहीं सोचेंगे लोगों को नौकरी कैसे दें, देश की नहीं सोचेंगे कैसे तरक्की की जाए। बस इधर घूमो उधर जाओ उधर जाओ, ये वो बकवासबाजी फालतू की। 1 करोड़ लोगों की आपने ऐसी की तैसी कर दी, 2 महीने में मार दिया उनकी आत्माओं को आपने, उनको जलील कर दिया आपने, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हो, और आप और गंजे सुन ले अहमद शाह के बच्चे, ये जिम्मेदार है और ये प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। आप दोनों जिम्मेदार हो इस चीज के, कोई और जिम्मेदार नहीं है। आपने बर्बाद किया इस देश को, आपने रेपुटेशन खराब की, हमारा मान सम्मान खराब कर दिया पूरी दुनिया में। यहाँ पे तो इंसान को इंसान नहीं समझते, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। किसने ताकत दी आपको ये सब करने के लिए? आपको पता होना चाहिए था कि इसका अंत होगा, आपको एक्शन लेने से पता होना चाहिए था, क्यों नहीं सोचा आपने? जो हम करेंगे करेंगे, मेरा भी देश उतना ही जितना आपका है। मुझे लड़ाई होती है इस बात से, गुस्सा आता है जो आपने किया है। तुमको आप मेरे साथ भी यही करेंगे, तुमको किसी और के साथ भी यही करेंगे। आपने तो पीछे रख के बैठ के मेरे बाप का देश है ये, मेरा देश जो मर्जी करूंगा, नहीं करने दूंगा। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, ये मोदी का नहीं अकेले का, और ये अमित शाह का भी नहीं अकेले का। ज्यादा बनो मत, अपनी औकात में रहो जो तुम्हारी औकात है। चोरी से इलेक्शन करके आए तो ढंग से काम करो, नहीं तो ऐसा उड़ा दिया जाएगा पता नहीं लगेगा आपका भगवान बैठा है ऊपर, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, याद रख लेना। और हर दुखी इंसान के अंदर से भगवान की आवाज आती है, जिसको आप सताओगे। कहने को तो ये बातें बहम की हैं, लेकिन याद रख लेना, एक सांस कई बार ऐसी बददुआ दे जाता है कि अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। और रावण जैसे नहीं रहे इस दुनिया में। आप क्या है? कुछ नहीं हो। इंसान को समझो, इंसान मानव को मानव समझो, भूल जाओ हिंदू मुसलमान सिख भारत में सब धर्म वर्म कुछ नहीं होता, सब बना हमारे बनाए हुए अपने, भगवान ने नहीं बनाए और ना भगवान बनाएगा। अपनी चीज है उसकी क्यों बनाए, उसकी जरूरत पड़ी है। लेकिन आपको पड़ी है क्योंकि आपको तो सत्ता चाहिए। मेरा मतलब ये है जनता से, पब्लिक से आप भी होश में आ जाओ। पब्लिक ज्यादा नशा अच्छा नहीं है मोदी भक्ति का या कांग्रेस की भक्ति का, कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। देश भक्ति वही होती है, देश के बारे में सोचे, मुझे क्या लेना है मोदी से और मुझे क्या लेना है राहुल गांधी से। मुझे अपने से लेना है, अपने देश से लेना है। जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए करना है, ना राहुल के लिए करना है ना मोदी के लिए करना है। मेरा देश सही है तो मैं भी सही हूँ, मेरा देश अच्छा होगा तो मैं भी अच्छा हूँ। मैं फिर कह सकता हूँ हाँ देखिए मैं भारत से आया हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, तब कह सकता हूँ। नहीं तो कहेंगे यार आप तो कुत्ते, आप तो आदमियों को मारते हो, आप कैसे देश को? आप में हिटलर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आप में नेतान्याहू में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वो भी फिलिस्तीनियों को मारता है, हिटलर भी लोगों को मारता था, रावण भी लोगों को, सब सारे के सारे आतंकवादी थे कौन आए हैं? हम कहते थे मुसलमान का बस कितने आतंकवादी, मैं लिस्ट दे देता हूँ कितने आतंकवादी हैं। हिटलर आतंकवादी था, रावण आतंकवादी था, हतंस आतंकवादी था, नेतान्याहू आतंकवादी है, और कितने सीरिया में आतंकवाद नहीं है क्या? यमन में मारे जा रहे वो आतंकवाद नहीं है क्या? कहाँ नहीं है? बस आपने नाम लिख दिया कि ये आतंकवादी है, आपके कहने से हो गया। अरे आप भी तो आतंकवादी हो जो इन लोगों को तंग कर रहे हो आज की तारीख में। आप कौन हो? ये भी आतंकवाद है। आप नहीं मानोगे क्योंकि आप तो अरे देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे? मेरे भाई जो कश्मीरी हैं उनको क्यों मार रहे हो तुम? क्यों मार रहे हो? उनका कसूर क्या है? ये बात चुभती है, हर एक को चुभती है। सच बोलना चुभता है। आपकी तारीफ की जाओ, आपके भजन गाए जाओ, मोदी मोदी करे जाओ तो बहुत अच्छे हो। इनके खिलाफ बोलो तो देशद्रोही हो गए। हम तो बोलेंगे, क्या करोगे? ऊपर जाना है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, मैं ऊपर भी नहीं छोड़ने वाला आपको। कहाँ जाओगे देखता हूँ। आत्मा मजबूत जब होती है ना, किसी का डर नहीं होता किसी को। हमारी आत्माएं जब तक डेवलप नहीं होंगी, हम ऐसे डरते रहेंगे तो डरते रहेंगे। अरे एक दिन मरना है, मरेंगे, कोई रोक नहीं सकता उसको। जिस दिन लिखे उस दिन जाना है, बहुत चले गए, सब जाएंगे, बचने वाला कोई नहीं है। बनते रहो, दादागिरी करते रहो अपनी यहाँ पे। खैर, अब ज्यादा ये बोलना जरूरत से ज्यादा अच्छा नहीं होता। गुस्सा आ जाता है कई बार जब लोगों के बारे में सोचता हूँ कि क्यों हम किसी को सता रहे हैं। क्योंकि जब सरकार अगर किसी को सता रही है तो सरकार हमने बनाई है, इसलिए गुस्सा आता है कि मेरी सरकार अगर किसी को सता रही है तो मैं भी उसका हिस्सा हूँ। अगर मोदी कहीं पाप कर रहा है या मिनिस्टर कहीं पाप कर रहा है तो मैं भी तो उसे पाप करने दे रहा हूँ। मैं ये क्यों ना सोचूं, मैं क्यों छोड़ दूं कि इसने क्या मैं क्या जानूं? नहीं, मेरे को कम से कम भूलना तो चाहिए था। ये मेरी ड्यूटी बनती थी क्योंकि मेरा देश है।
क्योंकि आज वो सत्य रहे हैं, कल को मैं भी सकूंगा। या तो आप कह दो कि वो हमारे नहीं है, साफ कह दो, आप उनको अपना भी कहते हो और हैं, तो भैया उनसे फिर अगर कल को मेरे साथ होगी तो आप तो मेरे साथ भी यही ट्रीटमेंट इलाज करोगे, इसको कर दो, बंद कर दो, उस पर करके लगा दो। तो भैया इसका मतलब ये हो गया आप, मैं आपका गुलाम हो गया, क्यों नहीं हो गया? क्या प्रधानमंत्री कौन है अभी मेरा? मेरे किसी लोगों ने उसको चुन के बनवा दिया, तो मेरा मालिक बन गया, वो मेरा भगवान बन गया। वो मेरा भगवान तो वही है, मोदी नहीं है, कोई नहीं है इस जमीन पे, कोई भगवान नहीं किसी का। उसको चांस दिया भगवान ने उसको कि सेवा करो लोगों की, इसीलिए उसने चांस मुझे भी दिया कि आप मेरी जमीन को अच्छा करके आ जाओ, कुछ अच्छा करके आ जाओ, और फिर मैं आपको और काम दूंगा। वो सोच तो फेंक दी। जैसे हिटलर ने सोचा था मार दो इतने सारे आदमी, ये तो मार दो इतने सारे आदमी, तुमने बनाए हैं। वही बात आ जाती है, अरे तुम्हारी औकात क्या है यार? तुम्हें थोड़ी सी वो मिल गई सीट, उछलने लग गए ऊपर को, साथ लेके जाओगे इस सीट को? क्या लेके जाओगे तुम? कोई बात अब स्पिरिचुअल आ जाती है कि आप पंडित वाली बात करने लगे, आप गुरु वाली बात कर, बात गुरु वाली नहीं, सच्चाई है। अरे तुम्हारी जब है नहीं तो क्यों मर रहे हो उसके ऊपर? उसको अच्छा कर सकते तो कर दो, नहीं कर सकते तो खराब तो कम से कम मत करो। मोदी बच जाएगा या ऊपर जाके, आप सोचते हो? ऊपर भी उसका वही हाल होगा जो होता है क्रिमिनल्स का। जब तुम इतने लोगों को तंग करोगे तो कोई तुम्हें इनाम नहीं मिलने वाला, वहां पे वही मिलेगा जो सबको मिला है पहले। जिसने मानवता को तंग किया वो बच नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और जितने अच्छे काम किए, जो कितना भी छोटा किया ना, उसको उसका नाम मिलेगा। तो तुम भी उसी लाइन में लोगे जाके, समझते रहो प्रधानमंत्री अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है, कितने आए कितने गए कौन पूछता है, हजारों साल से कितने राजा आए कितने कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता ना। तो आप किस बात के घमंड लेके बैठे हो भाई? किस बात का घमंड है आपको? अब हो क्या, एक मानव बनो पहले, तो आपको किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। आप जब मानव बन जाओगे, मानव का माइंड आपका होगा, मानव की सेवा करने की सोचोगे, सबको बराबर समझोगे, ये सारी दुश्मनी, ये सारी बकवासबाजी, ये सारी गंदी राजनीति अपने आप साफ हो जाएगी। ना कोई हिंदू होगा ना कोई मुसलमान होगा, दोनों फेक हैं। ना हिंदू रियल है ना वो, दोनों अपने अपने भ्रम में जी रहे हैं। हम सब धर्म अपने भ्रम में जी रहे हैं, सब भ्रम है, सारी दुनिया में भ्रम है। क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, पता नहीं कौन सी दुनिया से कहा ले, जो असली काम है वो नहीं कर रहे, इन्हीं चक्रों में घूमे जा रहे हैं। हिंदुओं को जो सारा दिन व्रत रखेंगे, मुसलमान पूरा महीना, सबकी अपनी अपनी है। लगे रहो, आपके मन को शांति मिलती है इसलिए रख रहे हो, क्योंकि आपकी इतनी शक्ति नहीं है कि आप भगवान को सीधा प्राप्त कर लो, इसलिए आप मीडिया में मुक्त रहते हो। कौन से चैनल से मैं जाऊं? अरे भगवान तो सामने बैठा है यार, तुम्हें दिख नहीं रहा? सामने वो मेरे को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। आपकी शक्ति कौन चला रहा है, आपको शरीर कौन चला रहा है, आपको दिख नहीं रहा। आप खामखा लगे हो रिसर्च करने में, मेरा ये या तेरा ये, तेरा मेरा ये बात समझ जाओ। थोड़ी सी जिंदगी है, शाम का पता नहीं क्या होने वाला है, सुबह का नहीं पता क्या होने वाला है। किस बात की जरूर कर रहे हो? इंसान को इंसान रहने दो, पॉजिटिव काम करो, तब सही रहोगे, नहीं तो बर्बादी आपके पीछे आएगी। खुद इन्वाइट करो, फिर मत कहना भगवान तूने ये कर दिया। थोड़ी सी बात का डाइवर्शन हो रहा है, लेकिन सच्चाई है। इंजीनियर को सिखाया जाता है काम करके दो, अच्छी तरह से करके दो, क्वालिटी से करके दो, सेफ्टी से करके दो। अगर वो ना करे तो काम खराब होता है। उसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड वर्क, उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसके ऊपर डिस्प्यूट होता है, उसका यूज नहीं होता है। उस जिस काम के लिए वो बनाया गया वो काम उसका नहीं होता, उसको वैल्यू नहीं दी जाती है। यार ये सब स्टैंडर्ड छोड़ो, इसको फेंक दो, डिस्ट्रॉय कर दो उसको, या इसको डिफेक्टिव मान लो, या इसकी पेमेंट पूरी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आपकी बिल्डिंग गलत बन जाए, आपकी मशीन गलत बन जाए, क्या वो काम करेगी? नहीं करेगी, बीच में इमीडिएटली डिफेक्ट आ जाएगा उसका। तो हम भी तो वही हैं, हम गलत चीज को क्यों मान रहे हैं? अगर एक मशीन पार्ट गलत फिर बन जाए, साइज पूरा ना हो, सही सिस्टम ना हो, उसकी केमिकल कंपोजिशन पूरी ना हो, उसके अंदर मिनरल्स पूरे ना, क्या वो काम करेगा? उस स्पीड से करेगा, उस पावर से करेगा जिसके लिए बनाया? वो नहीं करेगा। क्या वो मेटल वो स्ट्रेंथ देगा? नहीं देगा। क्या मकान जब भूचाल आएगा तो खड़ा रहेगा? नहीं, क्रैक्स आ जाएंगे, सेटलमेंट कुछ हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं बना, कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। अगर हम आदमी जो डिफेक्टिव पैदा होता है तो जिंदगी भर डिफेक्ट काटता है कि नहीं काटता है? ये हैंडीकैप पैदा हो गया, ये हो गया, वो गया, इसकी आंख खराब हो गई, वही चीज तो है जिंदगी में। ऐसे डिफेक्ट को पहले निकालना पड़ता है, और आप तो डिफेक्ट लाए जा रहे हो, कोई किसी के नाम में, कोई किसी के नाम में। आपका पर्सनल रिलेशन है भगवान से, उसको रखो, कौन रोक रहा है उसको। लेकिन जहाँ देश का सवाल होता है वहां मत रखो ऐसा। कोई भी कंट्री रखती है, फंसताती है, सब फंसताते हैं, कोई सही नहीं रहता। आज सऊदी अरब देख लो, कितना उसे रिस्ट्रिक्शन रखी, आज वो आहिस्ता 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 पीछे हट रहा है उससे, क्योंकि नुकसान है। वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं दुनिया में इतना कुछ रहा, हम भी आगे हैं, उसके लिए उनको अपनी जो बकवासबाजी थी वो काटनी पड़ रही है।
आहिस्ता आहिस्ता का ठीक है, एकदम नियुक्ति कुछ ऐसा कर तो रहे हैं ना। मतलब एक जगह के उनको भी सोचना पड़ा कि जो अब तक किया था कहीं ना कहीं गलत था। जब आपको ये समझ आता है कहीं गलत था तो आपको वापस होना पड़ता है। आज वही वही देश हैं जो पहले तेल के घुमंड में थे कि हमारे पास तेल इतना है, हमारी शक्ति इतनी है, बस आज वही आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं कि अब टूरिज्म की तरफ जाओ, अब इससे और की तरफ जाओ, अब उसकी तरफ जाओ, क्योंकि समझ गए हैं कि सब कुछ परमानेंट नहीं है, कुछ टेम्पररी है, कुछ परमानेंट है, सब कुछ ऐसा नहीं है, हर चीज चेंज होती है, वो समझ गए हैं। लेकिन हमारा देश नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा हमारा देश। धर्म के नाम पे अधर्म यही हो रहा है, अच्छे काम के नाम पे गलत काम यही हो रहा है। एक बार सत्ता की अमीरी समझ लेता है मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए जब तक आप मौत को सामने नहीं रखोगे और दूसरों के काम के, आप दूसरों की हेल्प जब तक नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कितने भी पढ़े लिखे विद्वान क्यों ना हो, कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, आप जब तक देश के लिए और लोगों के नहीं सोचोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सोचना पड़ेगा। भूल जाओ कि भारत का संविधान, तो सब कुछ भूल जाओ, शांति से रहो। सबसे बड़ी बात यह है, हम मनुस्मृति लागू कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये सारी गलत बातें हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी औकात कुछ नहीं है। आप मनुस्मृति लागू करके तो देखिए, रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। इस देश के कई टुकड़े हो जाएंगे, देख लेना। आपको मानता कौन है? जो देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो आपकी बात नहीं मानती। कुछ 10-15-5% लोग जो आपके अनपढ़ बनिए हो गए या राजपूत हो गए या पंडित हो गए, उसके अलावा कोई नहीं मानता। एससी नहीं मानता, एसटी नहीं मानता, ओबीसी नहीं मानता, मुसलमान नहीं मानता, सिख नहीं मानता, ईसाई नहीं मानता। मानता कौन है? 80-85% लोग वो हैं। आप उनके सामने आप लड़ लेंगे? आपकी औकात है इतनी? अरे वो सब खड़े हैं आपके सामने लड़ाई करने के लिए, आप क्या लागू करेंगे? आप ही उड़ा दिए जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? इसलिए बातें हो करो जो प्रैक्टिकल हो, जो पॉजिटिव हो। लेकिन आप पॉजिटिव बात नहीं करना चाहते, बकवास करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भड़काना है लोगों को, बस एक ही काम है। देश को बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बनाने की कोशिश करो। और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है पावर वालों, ये पावर तो आनी जानी है, कल चली जाएगी। आप करते रहे हिंदू तो बना, कौन पूछने वाला है? ये 85 एक तरफ और 15 एक तरफ में जब युद्ध हुए ना आपस में, तो आपको पता लग जाएगा, आपको जगह नहीं मिलेगी भागने की। जब गुस्सा आता है, कोई भी हो इंसान, वो जब भागता है ना, गिरता है, और जो पीछे उसको भगाता है वो और भगाता है उसको, वो आदमी फिर गिर ही जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो ना कि जो जिसको आप आज अछूत समझते हो, जिसको आप कहते हो नाली का कीड़ा है, जिसको आप कहते हो तुम मेरे नौकर, मेरे से दूर रहे, कहीं ऐसा ना हो उसके आपको फिर बाद में उसी की सेवा करनी पड़ेगी। और करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। आज आप पावर में इसलिए समझ रहे हो अपने आप को, आप जानते हो हर इंस्टीट्यूशन में आपने अपने आदमी बिठा रखे हैं, हर जगह आपके आदमी है। सुप्रीम कोर्ट भी अछूता नहीं है आपके आदमियों से, कोई भी अछूता नहीं आज की तारीख में। लेकिन ये सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी है। आपकी वजह से आपको समझ नहीं आ रही बात, क्योंकि आप दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप भला करोगे पब्लिक का तो ये बात नहीं होगी। आप फालतू की बातों में समय खराब कर रहे हैं अपना। यही समय जो आप खराब कर रहे हैं इन बातों में, ये आप अच्छे काम के लिए लगाते, इकोनॉमी ठीक कैसे की जाए, आप जॉब क्रिएट कर देते ना, तो देखते आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती यहाँ पे। ना कोई कश्मीर की प्रॉब्लम होती है आपको, ना कोई और असम की प्रॉब्लम होती, कोई नहीं प्रॉब्लम होती, क्योंकि लोग अपने खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। जहाँ काम नहीं है वहाँ लड़ाई है, याद रख लेना। अब मैं इस बात को खत्म करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया, फिर बात करेंगे आप लोगों से। धन्यवाद आपका। जय भारत।